ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परम आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आजको विशिष्ट यहाँ अध्यायमा हामीले विशेष गरिकन श्रीमद् भागवत महात्म्यको जहाँ प्रथम अध्यायको मन्त्रलाई श्रवण गर्नेछौँ। प्रत्येक श्लोकलाई श्रवण गर्नेछौँ। एकचित्त भइकन यहाँहरूले यी श्लोकहरूलाई पाठ गर्नाले या श्रवण गर्नाले मात्रै पनि कयौं जन्मका पापहरू नाश हुने गर्दछन्, भाग्यको उदय हुने गर्दछ र साथसाथमा कुल पितृको कृपा आशीर्वाद हामीलाई प्राप्ति हुने गर्दछ। भगवान श्री हरि वासुदेवको भक्ति पनि प्राप्ति हुने गर्दछ। आउनुहोस् सुरुवात गरौँ आजको प्रसङ्गबाट। ओम वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ प्रथमो अध्याय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषेषु तमासीनमभिवाद्यं महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्ये समप्रभा श्रुताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासस्स वैष्णवैः क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्सासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैयो शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं सत्सोत्साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणि लोकसुखं सुरुद्रो स्वर्गसम्पदं परेचन्ति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभम्। श्रुतौ उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते अतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसार भयनाशनं। भक्त्योघव्रदनं यच्च कृष्ण सन्तोषहेतुकं तदहं ते विदास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रास त्रास निनाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकिरेण भासितम्। एतस्मात् परं किञ्चिन्मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुम्भं गृहे त्वय्यो देवास्तत्र समागमन्। शोकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्या कुशलाः सुराः कथासुधां परेच्छसो गृहीत्वयो सुधामिमाम्। एवं विनिमय जाते सुधा प्राज्ञा परपीयताम् परपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। को सुधा को कथा लोके कोक्पा काच को मणि महान् ब्रह्मारातो विचार्य यों तदा देवान् जहासः। अभक्तां स्तां सविज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्ञो मोक्ष्यं तथा वीच्या पुरा धातापि विस्मिता। सत्ते लोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजाम् लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः
मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणात् सद्धो वैकुंठ फलदायकम सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम् सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरै यद्यपि ब्रह्मसम्बद्धा श्रुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताह श्रवणविधि कुमारैस्तस्य भाषित शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि सर्वे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तैः सह श्रुतौ उवाच अत्र ते कृतयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्री सुस्तत्र नारद कुमारा उवाच कुमारावचो है कथं ब्रह्मांदिन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतः सा गमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनाः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नेचितं वद कारणं नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वेत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनं योमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचित् चर्म मनस्सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाकूटभाषिणा मंदाः सुमन्दमतयो मंदा भाग्यहुपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता स परिग्रहा तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयिणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम् आश्रमा एव नैरुद्वास् तीर्थानि सरितरस्तथा देवता ये तनान्यत्र दुष्टै नष्टानि भूरिश न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरं कलिदावानलेनाद्ध साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदः शिवशूला द्विजातय कामिन्या केशशूलिन्या सम्भवन्ति कलाव्य यों पश्यन् कले दोषान् पर्यटन्नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयेतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरिणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निशोषन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरा दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपो विज्यमाना शतस्त्रीभिः बुद्धिमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दुरादः गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विरला चाब्रवीद्वच बालोवाच भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वर्थागहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्ति भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच काशीतुं का विमौचेमा नार्या का पद्मलोचना वदद्देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्येना मानौ कालयोगेन जर्जरौ गंगादा सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता
तथापि न च मे श्रेय सेविताय सुरैरपि इदानीं शृणु मद्दातां सचितस्तुं तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुता सुखमावह उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता कोचिन् महाराष्ट्रे गुरुझरे जीर्णतां गता तत्र घोरकले योगात् पाखण्डै खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यं सह मन्दताम् वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेयो स्वरूपिणी जाताहं युवतीं सम्यक् प्रेष्टरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सहितावत्र सुतौ मे क्लिश्यत श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं मया यातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्ध्वा विमौ कुतायि त्रयाणां सहचारित्वात् द्वैपरीत्या कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति अत शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मपि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस त्वया कार्यो हरिः सं ते करिष्यति श्रुतौ उवाच क्षीणमात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्ये मुचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणु सावहिता बाले युगोऽयं दारुणकली तेन लुप्त सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अगासुरायन्ते साठे दुष्कर्मकारिणा इह सन्तो विषीदन्ति परिष्यन्ति इह साधव धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सधीरः पण्डितोऽथवा अस्पृश्या नवलोकेयं शेषभारकरी धरा वर्षे वर्षे कर्मा जाता मंगलम नापि दृश्यते न त्वामपि श्रुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धै जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणीं नवां धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिनिरतेति यत्र च अत्रेमौ ग्राहका भावान्न जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखे नेहा प्रसुप्ति मन्यते नयो भक्तिरुवाच कथं परिचिता राज्ञा स्थापितो हा शुचिकलीं प्रवृत्ते तु कलौ सर्वासार कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्य धर्म कथमिच्यते इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्यहम् नारद उवाच यदि पृष्टत्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्द भगवान् मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दीनात् कलिरायात सर्वसाधनवादक दृष्टो दिग्विजयो राज्ञो दीनवत्सरणं गत न मया मारणीयोऽयं सारङ्गं यो सारभू यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् क्लौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवो सारनीरसं विष्णुरात स्थापितवान् कलिजानं सुखाय च कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा विप्रै भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः अत्युग्र भूरि कर्मणो नास्तिका रौरवा जना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुलचेतस
तेपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गत मनसस्साम् जया लोभात् दम्भात् पाखण्ड संश्रयात् शास्त्र नभ्येसनाच्चयो ध्यान योग फलं गतम् पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषायो पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने नहि वैश्यवता कुत्र संप्रदाय पुरसरा यों परलयतां प्राप्तो वस्तु सारस्थले तले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितम् श्रुतौ उवाच इति तद्वचनं श्रुता विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूय श्रूयेतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मदभाग्येन समागत साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति मायां यस्य कायाधवसते वचन रजनहमेकं केवलं चाकलय्यम् ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपादो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथम अध्याय इति श्री जय बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण को जयो।